एक रुतबा है, एक पोजीशन है आपके लिए। And God will use you in whatever position He needs you in. मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आपको भी आपकी जरूरत के मुताबिक पोजीशन दे, दर्जा दे। If we will stay a servant of God, हम खुदा के नौकर की मानिंद हम इधर खड़े हैं, and God sees that He can trust His servant, और खुदा जो है वो देख रहा है वो हम पर, अपने नौकरों पर क्या करता है, भरोसा रखता है, then God will use His servant where He needs them. और खुदा जहां चाहता है अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। You remember when Paul was writing his letters. मेरे अजीजों, आप याद करें जब पालूस रसूल को, Paul said, Paul, a servant of God, called to be an apostle. पालूस के लिए कहता है कि खुदा का खादम, खुदा का नौकर। Peter said, Peter, a servant of God, called to be an apostle. पत्रस जो खुदा का खादम है और वो खुदा के रसूल होने के लिए बुलाया गया। They were a servant before they were the apostle. They were a servant before they were an apostle. मेरे अजीजों, इससे पहले वो नौकर थे, इससे पहले कि खुदा के वो खादम बनते। God is looking for servants today. खुदा जो है वो सर्वेंट को ढूंढता है, नौकरों को ढूंढता है, शागिर्दों को ढूंढता है। People who are willing to say, here I am, use me. दुनिया में लोग हैं जो कहते हैं, खुदा मैं हूँ तेरे लिए, मैं आया हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। And then the reward you will have when you get to heaven. और ताकि मुझे रिवॉर्ड मिले, इनाम मिले आसमान पर। And you hear the words of Jesus. और जब आप यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, When Jesus says, come in my good and faithful servant. और खुदा यीशु मसीह कहते हैं, आ मेरे अच्छे नौकर, enter into all of this that I've created for you since time began. और ये सब कुछ तेरे लिए ही बनाए आलम से बनाया हुआ था। Jesus gave his disciples power. यीशु ने अपने शागिर्दों को कुव्वत बख्शी। He gave them a position. और कुव्वत के साथ साथ उन्हें एक दर्जा बख्शा। Then look in verse 5 and 6. हम 5वीं और 6ठी आयत देखेंगे, मत्ती रसूल की अंजील उसके 10वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत देखेंगे। It said, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। Jesus gave them power. खुदावंद यीशु ने उनको कुव्वत बख्शी। He gave them a position. और उन्हें एक दर्जा बख्शा। And he gave them a place to serve. और उन्हें जगह बताई कहां जाके इस्तेमाल होना है। He said, don't go to the Samaritans. और उसने कहा कि सामरिया में मत जाना। He said, don't go to the Gentiles. और उन्होंने कहा कि गैर यहूदियों में, गैर कौमों में ना जाना। He told them, only go to the lost sheep of the house of और Israel. उसने सिर्फ कहा कि इस्राएल की सिर्फ खोई हुई भेड़ों में जाना। This was the place he gave them to serve him. और ये अपने शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह ने बताई जगह कहां जाना है। God has given you a place tonight. मेरे अजीजों, आज रात खुदावंद आपको भी दर्जा और जगह बताना चाहता है। He has called you to Bangkok. उसने आपको बैंकॉक के लिए बुलाया है। आमीन। He's called you to Thailand. और उसने आपको थाईलैंड के लिए बुलाया है। Because God needs servants in Thailand. क्योंकि खुदा को जरूरत है थाईलैंड में अपने शागिर्दों की। He needs people that will take his message into Bangkok. और वो चाहता है कि उसके लोग आए और वो बैंकॉक के अंदर खुदा का कलाम सुनाए। And this is why God has you here. और इसलिए खुदा ने आपको यहाँ बुलाया है। God has given you a place to serve खुदा ने tonight. आपको ये जगह दी है। There's people you work with. मेरे अजीजों, यहाँ पे लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। People in your community. आपकी कम्युनिटी के, आपके कौम के लोग हैं। People in the marketplace. ऐसे लोग जो मार्केटों में जब हम जाते हैं उनको भी खुदा का कलाम सुना सकते हैं। And God has given you the opportunity to take the message और to मेरे them. अजीजों, खुदा ने ये हम पर फजल किया है और हमें ये फजल बख्शा है ताकि हम उसके कलाम को कौमों तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। We don't need to worry about what is going on in Nepal. हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि नेपाल में क्या हो रहा We है। don't need to worry about what's going on in China. हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। Only worry about Bangkok.
Bangkok. सिर्फ हमें बैंकॉक के लिए परेशान होना चाहिए। And when God is finished using you in Bangkok, जब खुदा का रूह आपको बैंकॉक में यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, then God will take you to Vietnam. और फिर खुदावंद आपको लेगा, Then He'll take you to Burma. फिर आप बर्मा में लेके जाएगा, Then He'll take you to Cambodia. फिर आपको कंबोडिया में लेके जाएगा, Then He'll use you to reach the world. फिर आपको दुनिया में लेके जाएगा ताकि आप दुनिया तक पहुंचे। But right now He's giving you a place to serve in Bangkok. लेकिन खुदा ने अभी आपको जो जगह दी है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बैंकॉक के लिए। We need to be concerned with these things. हमें अपनी इन सारी बातों के को तवज्जो देनी है। Let God use you here. खुदावंद आपको इस्तेमाल करे इस जगह पे, बैंकॉक में। God needs people in Bangkok. खुदा को जरूरत है बैंकॉक के लोगों की। As I'm walking around Bangkok the last 2 nights, we need missionaries in Bangkok. मेरे अजीजों, पिछली 2 रातें जब मैं बैंकॉक में घूम रहा था और मैंने ये महसूस किया कि यहाँ मिशनरियों की जरूरत है बैंकॉक के अंदर। People who will take God's message. वो लोग जो खुदा का पैगाम पहुंचाएं लोगों तक। God can use you like His disciples. खुदावंद क्या तू मुझे इस्तेमाल करेगा अपने शागिर्द की माने? He's given you power. वो आपको कुव्वत देगा, He's given you position. वो आपको एक दर्जा देगा, He's given you a place to serve. वो आपको जगह देगा जहाँ पे आप इस्तेमाल हो। But then look at verse 7. आए हम 7वीं आयत को देखते हैं। It says, as you go preach, saying the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely you receive, freely give. 7वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ, और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। He gave the disciples purpose. मेरे अजीजों, उन्होंने यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक मकसद दिया। He said, as you go preach the kingdom of heaven, जब आप आसमान की बादशाही की खुशखबरी सुनाओ, preach the gospel of Jesus Christ, यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाओ, heal the sick, बीमारों को शिफा देना, cleanse the lepers, कोड़ियों को पाक साफ करना, cast out devils, और इब्लीस शैतान को, बदरूगिरता को आजाद करना। freely you have received, मुफ्त में तुमने हासिल किया freely give. और मुफ्त में ही बांटना। Now maybe you say, I cannot heal any sick. शायद आप कह सकते हैं कि मैं किस तरह से एक बीमार शख्स को शिफा दे सकता हूँ, I cannot cast out any devils. और मैं बदरूहों को किस तरह से निकाल सकता हूँ। Of course you can't. आप निकाल सकते हैं, But Jesus can. यीशु मसीह निकाल सकते Our job is to get them to Jesus. हैं। हमारी जो ड्यूटी है वो ये है कि यीशु मसीह की तरह करें। Someone comes and brother says, I am sick. जिस तरह ये भाई कहते हैं मैं बीमार हूँ, I'm sick, he says. ये कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, I say, brother, I cannot help you. कहते भाई क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? But let's go to Jesus. आए यीशु के पास चलें, And Jesus can help you. और यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। And then I pray with him. और मैं इसके साथ दुआ करूंगा, And I bring him to Jesus. और मैं इसको यीशु के पास And लाऊंगा, then Jesus heals him. और यीशु मसीह इस भाई को शिफा And देगा। now Jesus receives और praise यीशु मसीह आपको सुनेगा, because Jesus has healed him. क्योंकि यीशु मसीह शिफा देता है। Our job is to bring them to Jesus. हमारी जो ड्यूटी है मेरे अजीजों, लोगों को यीशु मसीह के पास लाना है, Our job is to take them by the hand and let Jesus heal them. और मेरे अजीजों हमारी ड्यूटी यह है कि हाथ से पकड़कर यीशु मसीह के पास लोगों को लाएं। Jesus has the power to do these things. मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास पावर है, कुव्वत है। There is a person who is mentioned in the Bible, their name is not even given. मेरे अजीजों, यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम नहीं लिखा गया। You remember the man, blind Bartimaeus. आप जानते हैं कि एक शख्स जो अंधा था, Blind Bartimaeus was by the highway begging. वो जो जन्म का अंधा था, वो भीख मांगा करता था, He could not see. और वो नहीं देख सकता था। Somebody would bring him to the road every day. और कोई उसको पकड़ के रोड पर लाता था हर रोज, He would sit and he would beg all day for money. और उसको बिठाता था पकड़ के कि तू मांग, पैसे मांग। They would come and take him back और home. फिर वो बंदा आता और उसको पकड़ के उसके घर में ले जाता, They would take his money.
और वो उसकी पैसे ले लेता give him something to eat. और उसको थोड़े से दे देता ताकि वो खाना खा सके। Tomorrow, the next day, they bring him to the road. और फिर दोबारा उस शख्स को, जो अंधा शख्स होता, दोबारा उसको सड़क पर ले आता। But one day he heard Jesus was और coming. एक दिन उस अंधे ने यीशु मसीह के बारे में सुना। The Bible doesn't say how he heard about Jesus. बाइबल ये नहीं बताती कि उसने किस तरह से यीशु मसीह के बारे में सुना। Maybe he heard how Jesus healed the sick. शायद उसने सुना हो कि यीशु मसीह बीमारों को शिफा देता है। Maybe he heard how Jesus made lame people to walk again. शायद उसने सुना हो कि यीशु मसीह ने जो है वो जिसकी टांगे खराब थी, लंगड़े, उसको सही कर दिया हो। Maybe he heard how Jesus made other blind people to see. शायद उसने सुना हो कि एक दूसरे अंधे को खुदा ने आंखें बख्शी है, बिनाई बख्शी है और उसने देखना शुरू कर दिया है। Maybe he even heard how Jesus raised dead people. शायद उसने ये भी सुना हो कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है। The Bible doesn't say how he heard. बाइबल ये नहीं बताती कि उसने किस तरह यीशु मसीह के बारे में But he सुना। said, if Jesus can do that for them, Jesus can help me. और उसने कहा यीशु मसीह जब ये कर सकता है तो वो मेरी भी मदद कर सकता है। So as Jesus is passing और by, जैसे यीशु मसीह वहां से गुजरे Bartimaeus cries out, और वो जो जन्म का अंधा था उसने शोर मचाया, Jesus, यीशु, thou son of David, दाऊद, इब्ने दाऊद, have mercy on me. मुझ पर तरस खा। Now the people told Bartimaeus, be quiet. और लोगों ने कहा जन्म के अंधे को चुप कर जा। They say, shh, he is not here to see you. और उसने कहा क्या चुप कर जाओ, तुझे देखता है, He has a program he's going to preach. वो तू नहीं देखता, वो जा रहा है ताकि वो खुदा का कलाम सुनाए। He doesn't have time for और you. उसके पास वक्त नहीं है तेरे लिए। Bartimaeus was not going to let that और stop him. मेरे अजीजों, वो जन्म का अंधरा जो है वो रुका नहीं Bartimaeus cried even louder, और उसने और ऊंची शोर किया, Jesus, जीसस, thou son of David, ऐ इब्ने दाऊद, have mercy on me. मुझ पर रहम कर। Now Jesus has already passed him by, और यीशु मसीह जब उसके पास से गुजरे but Jesus hears him crying, और यीशु मसीह ने उस अंधे की आवाज को सुना and Jesus stops और यीशु मसीह वहां रुक गए and he tells him to come. और उसने कहा आ मेरे पास। Now think about this. और मेरे अजीजों इस बात को सोचिए, He is a blind man. वो अंधा आदमी था, How can he find Jesus? किस तरह से उसने यीशु मसीह को तलाश किया। Somebody goes out out from the crowd of people and they take the blind man and they bring him to Jesus. मेरे अजीजों, कोई शख्स उसी बंदे को लेके जाता था, वो सड़क के ऊपर लाता था और फिर शाम को उसके घर में वापस ले We जाता। don't even know who this person was. हम नहीं जानते कि वो कौन सा शख्स था जो उसको लेके जाता था और लाता था। But when the person brings him to Jesus, लेकिन वो शख्स जब उसे यीशु के पास लाया, Jesus asked Bartimaeus, यीशु ने उस जन्म के अंधे से पूछा, what can I do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? Bartimaeus says, Lord, that I can see. और जन्म के अंधे ने कहा कि मैं बीना हो जाऊं। Jesus says, your faith has made you whole. यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। And Bartimaeus was healed on the और spot मेरे अजीजों, जन्म का अंधा बीना हो गया because somebody brought Bartimaeus to Jesus. क्योंकि कोई